Hello. Good morning, sir. Good morning. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So today we will discuss about the routing mechanism in the network layer services. Clear? So last time we had discussed about the packet switching of the uh, network layer. तो हम लोगों ने इसमें पैकेट स्विचिंग के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हमारा डेटाग्राम या पैकेट जो है one end to another end communicate करता है with the help of routers and switches. Clear? So ये हमने यहाँ से डिस्कस किया था लाइन स्विच राउटर एंड is it clear to all of you? Hello. So now we will discuss about the how this mechanism takes place. Clear? I have already told you that first of all the network layer take the packet from the transport layer, that is the upper layer, and then it moves the packet to the routers, that is R1, R2, R3, R4, and some LAN switches, and then it goes to the destination port here. Suppose AS want to communicate with the block, so the transport layer, that is the upper layer in the OSI model, and then it routes the packet to the routers and LAN switches. Then it goes to the destination, and in this total processing, it involves the data, many process such that the and the message can be delivered through packet form or datagram form. And if the packet is of large amount, then it should be fragmented before transmission, through which the time it takes would be reduced here. While in case of large packet, as the length will be large, so the time it will take will be large here. So reduce the problem of large packet length, we should break fragment into the small packets through which it can transfer easily. Am I audible to all of you? Yes, sir. Hello. Okay. Now the next step is we have already discussed about the packetizing. Clear? Then routing and forwarding, how the packet get route and forward to here. And we all have discussed this forwarding and routing mechanism, and we have discussed about the routing table previously. That suppose we have a data B and we have a source address B where the data is there or packet is there here. Now, a packet contains the header information in which source address is given and destination address is given. Clear? The source address carry the source information and destination address carry the destination information. The destination address exactly tells about where the packet is coming. The source address tell about the where from where the packet is coming. Also, if there is a
problem in the there is a problem in the routing of the packet in between the process, then error message will be generated to the source address. Yeah, error message will be communicated to the source address regarding the loss of that particular datagram or packet in between the path. Clear? So the source address is very important regarding communication. So you all need to know that here. And there is some routing mechanism, routing table is there, which tells about the which path it is following exactly. Clear? So we have the forwarding value, that is suppose we having data. Here it is going to the forwarding value taking with B, and then there is an output interface where it will be 10 to. Clear? And suppose it is going for at the 2 second interface 2, and then got the packet here at the port C. Clear? So this is the B and C exactly can be the same or different. Clear? This is the forwarding table we have discussed. Now some other services is provided like error control, which I have told you that during the datagram transmission. Yes, it have added a checksum field to the datagram to control any corruption in the header. See, you have already studied about the error checksum. It is used to basically reduce, it is used to communicate any error happening in the packet transmission. Clear? Or datagram transmission. So it avoid the corruption. It avoids any kind of corruption in the header, but not in the whole datagram. ये मीन्स अगर एड्रेस में कोई करप्शन आ रहा है तो ये उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर डेटाग्राम में कोई करप्शन आ रहा है होल डेटाग्राम में तो ये उसको करेक्ट नहीं कर सकता है. This checksum may prevent any change or corruption in the header of the datagram. So you should know that. Now the next one is the flow control, where we have talked about the flow control, in which suppose we have a path that is suppose overflowing by the source end. Here, जैसे मान लीजिए कि सोर्स ने डेटा को ट्रांसफर किया और एक साथ उसने कई सारा डेटा एट ए टाइम डेटाग्राम भेज दिया पाथ में, तो it may lead towards the corruption of data. Sorry, the overflow of data. Here, it means you just need to reduce the overflow of data that is at the router side. So router क्या करेगा इस केस में, या तो फिर वो पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा. तो अगर पैकेट्स मतलब उसके पास ज़्यादा आ रहे हैं तो या तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा. पैकेट ड्रॉप होगा तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म से क्या होगा कि डुप्लीकेसी ऑफ द पैकेट विल फॉर्म. मतलब एक पैकेट गया तो उसके डुप्लीकेट पैकेट पैदा कर दिया, मतलब बना दिया गया सोर्स एंड पे. क्योंकि एक एरर मैसेज आएगा सोर्स एंड पे कि देयर इज अ लॉस और एनी इंटरप्शन इन द पैकेट. सो वो उस पैकेट का एक डुप्लीकेट पैकेट जनरेट करेगा सोर्स एंड पे. तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी और इन द लास्ट क्या होगा कि हमारा इंफॉर्मेशन जो रिसीव होना चाहिए वो रिसीवर पे नहीं रिसीव होगा. तो इस तरह से कम्युनिकेशन हमारा इम्प्रॉपर हो गया. ठीक है. टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, राउटर्स जो कि फ्लो कंट्रोल को मतलब एक मैसेज जनरेट कर देंगे कि हमारे पास एक्सेस डेटा आ रहा है, सो इसको कंट्रोल करें. ठीक है ना. तो जो अपर लेयर होती है सोर्स कंप्यूटर प्रोड्यूसेस डेटा फास्टर देन द अपर लेयर ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर which consume the receiver will overwhelmed with the data. Okay. The receiver will be overwhelmed with the data. To control the flow of data, the receiver will send some feedback to the sender. Clear? Now the next one is congestion control, which I have already told you that the too many datagrams अगर एक साथ किसी एरिया में आ जाते हैं तो वो कंजेशन को हैपन करते हैं. ठीक है. कंजेशन का मतलब कि एक साथ कई सारे पैकेट अगर कहीं कलेक्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ डेटाग्राम, तो वो क्या करेंगे, जो भी सोर्स भेज रहा है कंप्यूटर को, ठीक है, सोर्स कंप्यूटर से जो भी हमारे पास डेटाग्राम आ रहा है अगर वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा नेटवर्क की तो वो क्या होगा, कंजेशन क्रिएट करेगा. जिस केस में क्या होगा, पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे आपके डेटाग्राम स्टॉप हो जाएंगे. तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जो कि बहुत वर्स्ट हो जाएगी. इसमें क्या करेंगे, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू हम अपर लेयर को इन्फॉर्म किया जाता है कि
कि आप अपने इस पैकेट को कंट्रोल करिए जिससे कंजेशन हमारा कंट्रोल हो सके, ठीक है। अदरवाइज डुप्लीकेट पैकेट्स भी जनरेट होंगे जिससे लॉस हमारा पैदा होगा। The next one is the quality of service. It is very important. So for better quality of service, we need to just focus upon the proper transmission and loss-free transmission in the network layer. So ये आपको बहुत ध्यान रखना है. If I talk about the security concern, so the data which is processing should be processed in the two form, that is connectionless process and connection oriented process. Okay? So connectionless में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा पैकेट है वो विदाउट एनी वायर की कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। That is a type of wireless communication where no connection is required, and in that particular case the data may get lost through the air transmission, clear, and it may lose their strength as well, clear. While in case of connection oriented transmission, we have certain routes and paths through which it can transmit it. Exactly, in this particular packet switching, we will discuss about mainly the connection oriented service. Okay. Here the connection will be there, and the data will get moved from one end to another end with the proper channel or path. Clear? Now, as we have discussed about the packet switching, which is very important regarding network layer protocols, exactly it follows the packet switching. Clear? The routers, in fact, is a switch that creates a connection between an input port and an output port. राउटर की मदद से हम इनपुट और आउटपुट पोर्ट को कनेक्ट करते हैं, क्लियर। जैसे एक इलेक्ट्रिकल स्विच करता है इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, वैसे ही राउटर यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है पैकेट ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो दो तरीके से एक हमारी स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग, एक पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ हम लोग को पैकेट स्विचिंग डिस्कस करना है नेटवर्क लेयर में, ठीक है। सर्किट स्विचिंग जो हमारा यूज होता है फिजिकल लेयर में यूज होता है, पैकेट स्विचिंग आपका नेटवर्क लेयर में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। If anyone asks about the circuit switching, then you will say that it is used in the physical layer, while the packet switching is adopted in the network layer. Am I properly audible to all of you? Yes. Now, the message will also transfer in the form of datagram. You should know that, either in packet form or datagram form. Okay? तो जो हमारा जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, इट कैन यूज टू डिफरेंट अप्रोचेस टू रूट द पैकेट। दो डिफरेंट अप्रोच यूज करता है पैकेट को रूट करने के लिए। एक होता है हमारा डेटाग्राम अप्रोच, एक होता है वर्चुअल सर्किट अप्रोच, ठीक है। तो डेटाग्राम अप्रोच है, उसमें हमारा डेटाग्राम ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो वर्चुअल सर्किट है, वी विल फॉर्म अ वर्चुअल सर्किट थ्रू व्हिच द पैकेट गेट ट्रांसफर्ड, ठीक है। So we will discuss this again. And the datagram approach is the connectionless services. The type of connectionless services. Okay? When the internet is started, to make it simple, the network layer was designed to provide a connectionless service. In this, the network layer protocol treats each packet independently, with each packet having no relation to any other packet. Idea हो जैसे हमारा जो क्या कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होता है, उसमें हर एक पैकेट अपने पैकेट से कनेक्टेड होता है, क्योंकि हर एक पैकेट किसी पैकेट को फॉलो कर रहा होता है। बट इन द केस ऑफ कनेक्शनलेस सर्विसेज, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्लियर, ये भी ध्यान रखना है आपको। Each packet have no relation to the any other packet या neighboring packet in such type of services. That is the datagram approach or connectionless services, clear. It was the network layer only responsible for delivery of packets from the
source to the destination. So you should also know that इसमें जो हमारा पैकेट है या मैसेज इन मैसेज के अंदर वो हो सकता है कि किसी सेम पाथ को ट्रेवल करके डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हो, और ये भी हो सकता है कि सेम पाथ को ट्रेवल ना कर रहा हो, मतलब कोई अदर पाथ को यूज कर रहा हो, ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये भी आपको ध्यान देना। व्हेन द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स अ कनेक्शनलेस सर्विसेज, ईच पैकेट ट्रेवलिंग इन द इंटरनेट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी पैकेट हमारे रूट होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट एंटिटी। नाउ there is no relationship between packet and belonging to the same message. The switch in this type of network are called routers. Router के थ्रू ही हमारा पैकेट रूट होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। There is a diagram for connection with packet switching. Is it visible to all of you? This diagram is visible. Sir. Okay. So this diagram exactly represents the connection less packet switching. ठीक है, जो कि डेटाग्राम अप्रोच को फॉलो करता है। So according to this, you can see in the middle of the block we have the routers R1, R2, R3, R4, and R5. Clear? So there are some different paths are there. Clear? So as you can see, we have some different paths to pass the packet at the destination side from the sender side. Suppose we have the datagram 1, 2, 3, and 4, and we are receiving the datagram from the transport layer. Clear? So sender will transfer it the sequence, and no datagram will be associated or have the information about the other datagram into the queue. Clear? So suppose R1 से path से हमारा होते हुए गया, then R4 पे गया, then R5 पे गया, and then it goes to receiver side. Some other path is also there. Suppose it is following from R1 to R2 and then R5 and then goes to receiver side. So you can say all the datagram are following in the different paths. Something like suppose if you see about the datagram 1, it is following the path R1, then R4, then I'm just marking this, you can see the switch. I zoom it. Okay, so we have the route like this. This is the route. It is going to R1, then this route, then there, and then there. So if there is a one path like this, another path is, if you see for datagram 2, it is following the path R1 to R2, clear, then R2 to R5, and then R5 to the destination, clear. If you talk about the datagram 4 and 3, which is of same type exactly, so it is following the route like it is going from here, clear, then R4 and R3 is going to R3 router, and then it is again diverting from two different paths. The R4, the fourth datagram will follow the path that is R3 to R5, and the third datagram will follow the path from R3 to R4, clear. So this is the mechanism. So third datagram will follow the path like you can see. I'm just roughing. So the third datagram will follow like this. I'm just marking here, then it goes to here, then it goes to here, and then it goes to destination. And the fourth datagram is following the path like this, here, and then at the destination. So we are having different paths for the individual datagram. They are exactly treated as independently. Yeah? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? The connectionless network. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And you can see there is a some kind of
some kind of routing mechanism in which datagram will appear first, it will transfer first. Clear? So suppose first datagram is initiating. Initially, you can see the first datagram is initiating at the sender side. It is at the topmost place. Clear? So in the queue, so it will be received firstly. Clear? So सबसे पहले यही receive होगा. फिर second datagram, फिर third datagram, and so on. Clear? So you can see if there is certain priority according to suppose we have some priority on the particular datagram, so it will be treated as on the priority basis. You should also know that. So each packet is routed based on the information contained in its header. में जैसी information header में होगी उस हिसाब से उसको route करते हैं. ठीक है? Source and destination address. Destination address define where it should go. Source address define where it come from. The router in this case routes the packet based only on the destination address. The source address may be used to send an error message to the source if the packet is discarded. अभी जो हमने आपको बताया था कि सपोज हमारा कोई मैसेज अगर डिस्कार्ड हो जाता है, कोई डेटाग्राम डिस्कार्ड हो जाता है, तो उसका एक एरर मैसेज जनरेट होता है. क्लियर? और वो जो एरर मैसेज जनरेट होगा वो किसको इन्फॉर्म करना होगा? हमें सोर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि आप क्योंकि सोर्स ने ही डेटाग्राम भेजा है, so that will be informed to the source that your datagram or packet is corrupted or lost in the communication. So this is the exactly routing table. Clear? तो इसमें डेटाग्राम अप्रोच हमारी फॉलो हो रही है. तो दिस इज एग्जैक्टली द फॉरवर्डिंग डिसीजन. हम यहाँ पे एक डिसीजन के बेस पे हमारा जो है डेस्टिनेशन एड्रेस पे पैकेट ट्रांसफर हो रहा है. ठीक. So we have source address, destination address, and data here, and we have again source address, destination address, and data at the another side. Okay. So there is a routing table in between the both transmission. Here. So there is a destination addresses A, B, F to H, and output interface is 1, 2 to 3. So you can see if suppose we have destination address B and the output interface is 2, so we can transfer data from this interface to another interface. Clear? This is the type of routing mechanism. Now the next one is virtual circuit approach of connection oriented services. First one was the connectionless service, that is datagram approach, and another is the virtual circuit approach, that is connection oriented service. In this particular connection oriented service, it is also called virtual circuit approach. There is a relationship between all packets. मैंने भी बताया था डेटाग्राम में कोई रिलेशन नहीं होता. ठीक है? अगर वो मैसेज से बिलोंग भी करते हैं तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है. मतलब जो नेबरिंग डेटाग्राम है वो नेक्स्ट डेटाग्राम से कोई रिलेशन नहीं रखता है. वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को मान के और मैसेज में मतलब वो राउटर के थ्रू कम्युनिकेट करता है. ठीक है? Now there is a relationship between all packets belonging to a message. Before all datagram in a message can be sent, a virtual connection should be set up to define the path for the datagram. जैसे वहाँ क्या होता था, वहाँ कोई virtual circuit हमारा नहीं रहता था before transmission. ठीक है? That is connection led type services. But यहाँ पे क्या है, this is connection oriented. So सबसे पहले डेटाग्राम को किस रास्ते से भेजना है, किस पाथ से भेजना है, it should be defined. Clear? ये हमेशा defined होगा कि इसका path क्या है. और जैसे ही कनेक्शन सेटअप हो जाएगा तो डेटाग्राम कैन फॉलो द सेम पाथ. जैसे ही रास्ता जो डेटाग्राम ट्रांसफर हो जाएगा. This type of service not only must the packet contain the source and destination address, it must also contain the flow level. इसमें केवल सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ही पैकेट के पास नहीं होता है, उसके अलावा एक फ्लो लेवल भी होता है. फ्लो लेवल जो कि क्या है, एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर है जो कि वर्चुअल पाथ को डिफाइन करता है which packet should follow. So it should have the flow label to define the virtual circuit identifier, each having the virtual circuit identifier
that defines the virtual path the packet should follow. Yeah? तो हर एक पैकेट के पास ये लेबल कैरी होता है, एक लेबल हम पैकेट के ऊपर लगाते हैं। जब भी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और वो जब ट्रांसफर होगा तो एक लेबल शुड आल्सो बी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पैकेट which exactly identify the virtual path. Clear? Although it looks as though the use of the label may make the source destination address unnecessary during the data transfer phase, parts of the internet to the network layer still keep these addresses. Clear? One reason is that part of the packet path may still be using the connectionless service. कुछ हमारा हिस्सा जो है नेटवर्क का अभी भी connectionless service को यूज कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि completely connection oriented है. Some part of the path in the packet transmission is also still connectionless service type. Clear? You can see this is the diagram for the virtual circuit packet switch network. Is this visible to all of you? This is virtual circuit packet. The virtual circuit packet switch network is visible to all of you. Is it visible to all of you? Okay. So you can see the sender will send the data from 4, 3, 2, 1. Clear? So it will receive accordingly at the receiver side, like 4, 3, 2, 1. So you should notice that we are having routers R1, R2, R3, and R4 in a path. You can see I am just zooming in. R1, R2, R3, and R4 here, and R5. So and when the connection is established, suppose the connection is established, now they are exactly dependent on each other. So you can see the communication is not independent. Means in previous case, that is connection-based service of datagram approach, you can see all the datagrams are following some different paths. We suppose the datagram first following from the R1, R2, and R4. Datagram second following the R1, R5, R4. So they are all following some different paths. So they are all independent. But if you see in this particular scheme, all the datagrams are associated with each other and they are exactly following the same path. It means they are of same message group and they are having some same label. So they are transmitting through the same medium. Okay? Suppose we have 1, 2, 3, and 4, that is the datagram from the sender side, that are going through the router R1, R3, R4, and then receiver. Okay? And then at the receiver side, if they are received. So they are having the same sequence as you can see. If fourth one is 1, 2, 3, 4 is there, and they are receiving in that particular sequence at the receiver side. So there is a connection, and there is you can see there is a relation between all the datagrams. So they are not independent to each other as in case of connectionless services. So this is a connection-oriented service that following the virtual circuit network. Yeah. So each packet is forwarded based on the label in the packet. जो उस पे label उस पे लगा होगा उसके according उसको हम forward किया जाएगा. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई लेटर है, लेटर को हम लोग कई तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं. पाथ वो एक ही फॉलो करेगा, जाने का रास्ता उसका एक ही होगा, जहाँ से भी वो इनिशिएट हो रहा है जहाँ जा रहा है वो जाएगा एक ही रास्ते से, एक ही पाथ फॉलो करेगा, बट इट विल मे टेक some time compared to another packet or another parcel here, because some services are like speed post, some services are like registry, some services are like normal delivery of the packet. ठीक है, तो सब में क्या होगा, थोड़ा डिले होगा. तो we assign a label का मतलब ये होता है कि किस सर्विस किसको हमें एक तरह से प्रियोरिटी देनी है. मान ली फर्स्ट को हमने लेबल दे दिया, स्पीड पोस्ट से इसको ट्रांसफर करना है तो वो 2 दिन में या 3 दिन में पहुंच जाएगा. सपोज किसी को हमने कोई और लेबल असाइन कर दिया तो हो सकता है वो थोड़ा और टाइम दे ले. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. जिसको जैसा लेबल असाइन करेंगे उसी हिसाब से फॉरवर्ड होगा नेटवर्क के अंदर. To follow the idea of connection oriented service designed to be used in the internet, we assume
that a packet has a label. So packet has a label. When it reaches the router, in this particular case, the forwarding decision is based on the value of the label. जैसे मान लीजिए कोई पैकेट किसी राउटर के पास पहुंचा, तो राउटर डिसाइड करेगा इसके ऊपर क्या लेबल लगा है उसके हिसाब से कि किसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सेकंड प्रायोरिटी देना है या थर्ड प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए राउटर हमारा R1 है, R1 सारे पैकेट रिसीव, तो वो सब पे लेबल चेक करेगा। आप देख सकते हैं जैसे हमारा 4-3 है, तो अगर मान लीजिए हम 403 का लेबल हाईएस्ट प्रायोरिटी का लगा है तो 4-3 को पहले ट्रांसमिट करेगा। अगर 1-2 पे लगा है तो 1-2 को पहले ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से फॉरवर्डिंग होगी बेस्ड ऑन द लेबल। और वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, इसको वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर भी कहते हैं लेबल को, ध्यान रखिएगा। तो 3 फेज प्रोसेस हमारा इसमें यूज होता है। पहले होता है सेटअप, फिर डेटा, फिर ट्रांसफर। तो वी आर हैविंग द 3 फेज सिस्टम। So we have exactly the 3 phase services here. So in this particular 3 phase system, we are having some what setup, data transfer and tear down. So पहले तो क्या होता है, नेटवर्क सेटअप बनता है। जैसे पहले अगर आपके पास डेटाग्राम है किसी सोर्स पे, तो इट विल जस्ट क्रिएट ए नेटवर्क सेटअप। ठीक है, सेटअप फेज में क्या होगा कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर एग्जैक्टली हमारे टू मेक टेबल एंट्रीज फॉर द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो टेबल जो हमारे पास राउटिंग टेबल है उसमें एंट्रीज इस्टेब्लिश की जाएंगी विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द which is used to route the packet from sender to receiver. टीयर डाउन पेज में क्या होता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन्फॉर्म द राउटर, सोर्स और डेस्टिनेशन राउटर को इन्फॉर्म करते हैं टू डिलीट द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। जैसे मान लीजिए राउटिंग टेबल है हमारे पास, कोई हमारा पैकेट हमारा डिस्कार्ड हो गया या हमारा कोई पैकेट जो है लॉस हो गया या एरर्ड हो गया, तो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस राउटर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि उस पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट कर दें क्योंकि वो पैकेट हमारा लॉस हो चुका है या हमारा पैकेट करप्ट हो चुका है। ठीक है, और सेटअप फेज हमारा क्या होता है, सेटअप फेज में हमारा या मान लीजिए कोई हमारी सर्विस कंप्लीट हो गई, कोई डेटाग्राम हमारा ट्रांसफर हो गया, तो उसकी एंट्री भी वो डिलीट करवा देगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है सक्सेसफुली। सो इट इज नो मोर देयर इनटू द नेटवर्क, सो इट विल आल्सो रिमूव द entries from the routing table. Setup phase क्या होता है? In the setup phase, the router creates an entry for a virtual circuit. तो सेटअप फेज में क्या होता है कि राउटर जो होते हैं वो एक एंट्री क्रिएट करते हैं वर्चुअल सर्किट। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव a source A that needs to create a virtual circuit to destination B. So for this particular virtual circuit, an entry will be created for the router. So two auxiliary packets need to be exchanged between the sender and the receiver. तो दो auxiliary packet हमारे sender और receiver के बीच में exchange होंगे। So the request packet and the acknowledgement packet. ठीक है, इस सेटअप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेंडर ने रिक्वेस्ट किया रिसीवर के साइड पे कि हमें एक पैकेट को एक्सचेंज करना है एक साइड से दूसरे साइड पे। सो इफ यू हैव द कनेक्शन, if we have the connection from that particular sender side to the receiver side for that particular packet, so we can send it here, and when the packet received to the receiver side, it will send the acknowledgement of that packet here. That is the setup phase. So basically three things are following for a connection oriented datagram approach. First one is the you can see first one is the setup phase, second one is the data transfer, and the third one is the tier
नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। Now am I audible? यस सर। Okay. So we are having this particular virtual circuit network. You can see this is the virtual circuit network. Clear? So here you can see we have port 1, port and labels. Clear? So we have suppose port 1, port 2 and clear, and label 1, label 2. So we have incoming and outgoing forwarding table. Clear? So we are having the incoming label, suppose L1 having source address, destination address and data. Clear? So according to this label, it will just route through the router. Clear? And having the port information for the incoming, that is port 1 and label 1. And then when it goes to the outgoing side, it will just coming to the port 2 and label 2. So it is having the outgoing label that is L2, source address, destination address, and data. So this is the exactly virtual circuit that goes for forwarding decision based on the level of the packet. Now, the another one is the request packet. Request packet is sent from the source to the destination. This auxiliary packet carries the source and destination address. So it is a request packet, which is a type of auxiliary packet which carries the source and destination address. Here, you all can see. So here you can see we have a network here from where the packet is generated here at the source end A. So if we route the packet from A to B from the network layer, so it's just following the path. You can see R1, R3, R4, and reaching to B as well. Clear? Or R1, R5, and R4, and reaching to the B. So if we have the suppose packet one, so it is going from R1, then it goes to what? Suppose we have a packet, so it will goes from the sender side A to R1, then R1 to R3, then R3 to R4, and R4 to the receiver side B. You can see the path 1, 2, and 3 and 4 here. And accordingly, there is a routing table you can see. So now these are the explanation of that. That is then source A send request packet to router R1. Router R1 receives the request packet. It knows that a packet going from A to B. It goes out राउटर R1 के पास कि हमारे पास एक पैकेट है, इसको हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो A से लेके B के पास, तो किस पोर्ट से ट्रांसफर करना है? पोर्ट 3 से ट्रांसफर करना है. We have पोर्ट 3 के थ्रू को ट्रांसफर करना है. So how the router has obtained this information is the matter of concern. Yes, so for the moment, assume it knows the output. So the router creates an entry in its table. Router क्या करेगा? अपने table उसके पास है, routing table, उसमें entry create करेगा for this particular virtual circuit, but it is only able to fill 3 of the 4 columns.